Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are going to start learning some phrases in German language. तो आज हम कुछ सीखते हैं कुछ phrases in German. So first of all, we will learn how to say thank you in German. So first one is here danke. Danke means thank you. Here danke schön. Danke schön मतलब thank you very much. जैसे हम बोलते हैं thank you. So thank you या thank you very much. Danke schön. Next one is here Danke sehr. Danke sehr. Sehr means very much. So thank you very much. Danke sehr. Next one is here vielen Dank. Vielen means many and Dank means thanks. So many thanks. Vielen Dank. Next way to thank someone Danke vielmals. Danke vielmals. Many thanks. Vielmals means many times. Next way is here vielen Danke im Voraus. Vielen Danke im Voraus. Thank you in advance. Voraus means होता है advance. या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इस Danke dir इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स के साथ हम बोल सकते हैं इस Danke dir या इस Danke ihnen. ये फॉर्मल है. फॉर्मल मतलब हम किसी बड़े के साथ बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर के साथ बोल रहे हैं, तो इस Danke dir या इस Danke ihnen. एक और होता है यहाँ पे Danke gleichfalls. Danke gleichfalls थैंक यू सेम टू यू. जैसे कोई खाना खा रहे होते हैं तो भाई अगर बोलते हैं ना कि एंजॉय योर मील तो हम बोल सकते हैं Danke gleichfalls मतलब थैंक यू सेम टू यू. हाउ टू से यू आर वेलकम इन जर्मन. सो बिटर और बिटर श्योन यू आर वेलकम. सो यू आर वेलकम बोलने के लिए बोलते हैं बिटर या बिटर श्योन. नेक्स्ट वन इज हियर मिट फर्ग्न्यूगन. मिट फर्ग्न्यूगन यू आर वेलकम. इसको हम ये भी बोलते हैं विद प्लेजर, है ना. जब किसी को हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम बोलते हैं विद प्लेजर या मिट फर्ग्न्यूगन यू आर वेलकम. अगर हम इनफॉर्मल की बात करते हैं विद फ्रेंड्स के साथ तो हम कैसे बोलेंगे काइंड डिंक नो प्रॉब्स. काइंड टेमा नो इश्यूज. फर्गिस एस फॉरगेट इट एंड शोन गुड इट्स ओके. तो ये फ्रेंड्स के साथ हम बोल सकते हैं. इसमें यू आर वेलकम को हम कितने तरह से बोल सकते हैं ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको. जैसे बिटर, बिटर ज़ेयर, बिटर श्योन या गन गेशेहन या गैरना. ये तरीके हैं यू आर वेलकम बोलने के लिए जर्मन में. सम अदर वेज ऑल्सो टू से यू आर वेलकम. keine Ursache, no need to thank me. Ohne Ursache, no worries. Nicht zu danken, no need to thank me. Danken means to thank. And nichts zu danken, same thing. है ना? It is the short form of nicht. Nix. Mit Vergnügen, with pleasure. And kein Problem, no problem. Dafür nicht, no need to thank. Dafür means for that, no need to thank. And if you are welcoming someone into your home that time, how will you welcome him? This word is willkommen. Willkommen. Willkommen means welcome. And next one is here. Herzlich willkommen. Hearty welcome to you. Herzlich willkommen. Next one is here. Sie sind willkommen. You are welcome. Sie means you. Sind means are. So you are welcome. Next one is here. Willkommen zurück. Zurück means back. So welcome back. Willkommen
Suryuk. Now we'll see then in how many ways we can use bitte in German. Bitte means please and it means pardon also. Bitte means go ahead and bitte means here you go and bitte means yes please. तो bitte बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि bitte का मतलब होता है प्लीज, पार्डन, गो अहेड, हियर यू गो या यस प्लीज. अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है इसका. नाउ विल लर्न हाउ टू से सॉरी और एक्सक्यूज मी. First one is here, Entschuldigen Sie bitte. Excuse me, please. If we are talking to any elders, to our elders, in a formal situation, Entschuldigen Sie bitte. But if we are talking to any friend, so in an informal way, we use Entschuldigung bitte. Excuse me, please. Entschuldigung. We can say Entschuldigung for saying sorry also. Es tut mir leid. Es tut mir leid means sorry. Es tut mir leid. Sorry. Wie bitte. Wie bitte means I beg your pardon. Noch einmal bitte means once again please. जैसे कोई चीज़ हम सुन नहीं पाते तो हम बोलते हैं ना कि पार्डन, या फिर बोलते हैं noch einmal bitte, once again please. Or we can say bitte wiederholen Sie. Wiederholen means to repeat. So repeat please. Bitte wiederholen Sie. Keine Ahnung means no idea. Ach so. Ach so means oh I see. Ach so. Einen Moment. Einen Moment bitte. Just a moment please. Einen Moment bitte. Yes, ja. No, nein. And vielleicht means maybe. So there are three words here. Yes, no and maybe. Ja, nein and vielleicht. And if you are really thankful to someone, so we will say ich bin Ihnen sehr dankbar für. Ich bin Ihnen sehr dankbar für. I am very thankful to you for something something. Jederzeit. Jederzeit means anytime. So that is all for this video. So we'll learn something new in next video. Till that is all for this video. So we'll learn something new in the next video. So till then, bye. Tschüss.